Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today in our EVS class, we are going to write the points of good habits in your notebook. Students, take out your EVS notebook where we have written the seasons revision. On the next page today we will write good habits. आज हम good habits लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, जब भी आप ये वर्क लिखो तब आपको डेट ये रेड लाइन को टच करके लिखना है. नाउ विल राइट द टाइटल. वी विल कीप 2 फिंगर स्पेस फ्रॉम द मार्जिन लाइन. मार्जिन लाइन से हम 2 फिंगर की स्पेस रखेंगे और यहाँ पर हम कैपिटल G लिखेंगे. सो वी विल राइट कैपिटल G. Now we will write small o. Again we will write small o. Then we will write small d. G-double-O-D. Good. Now we will keep 1 finger space. Good के बाद हम 1 finger की space रखेंगे और यहाँ पर अब हम लिखेंगे we will write small h, small a, small b, small I, small t, small s. H-A-B-I-T-S. Habits. Good habits. Now we'll write number 1 between 2 blue lines. 2 blue lines के बीच में हम number 1 लिखेंगे. We'll write our first sentence. अब हम हमारा पहला sentence लिखेंगे. Students, आपको मेरे साथ बोलकर लिखना है. We will write capital W from red line till blue line. Then we'll write small a between 2 blue lines, small k, small e, W-A-K-E, wake. Now we'll keep 1 finger space. Then we will write small u. ऐसे स्पेस होना चाहिए 1 फिंगर की स्पेस आफ्टर u. उसके बाद हमें स्मॉल p लिखना है फ्रॉम ब्लू लाइन टिल रेड लाइन. देन वी विल कीप 1 फिंगर स्पेस अगेन. देन वी विल राइट स्मॉल e, small a between 2 blue lines, small r, small l, small y, E-A-R-L-Y, early. Then we will keep 1 finger space again. Then we will write small I, small n, I-N, in, I-N, in. उसके बाद again we will keep 1 finger space. Then we will write small t, small h, small e, T-H-E, the. अब हमारी यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम कहाँ लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में. यहाँ ऊपर हमारे स्पेस नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे? उसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. ओके. नाउ विल राइट आफ्टर द ब्लू लाइन विल राइट स्मॉल m between 2 blue lines, small o, small r, small n, small I, small n, small g, M-O-R-N-I-N-G, morning. Now we will put a full stop. इसके बाद ही हम फुल स्टॉप लगाएंगे. अब पूरा सेंटेंस क्या हुआ? W-A-K-E, wake, U-P, up, E-A-R-L-Y, early, I-N, in, T-H-E, the, M-O-R-N-I-N-G, morning. Wake up early in the morning. Now we'll write number 2 in the next line between 2 blue lines. Okay, we will
write the next sentence, that is pray to God. So we will write after the margin line, we will write capital P, then we will write small r, small a, small y, pray, pray. जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं उसके बाद हमें 1 फिंगर की स्पेस रखना है. ओके, वी विल गिव 1 फिंगर स्पेस, then we will write TO2. So we will write TO2 like this, TO2. Again we will give 1 finger space, then we will write capital G, then we will write small o, small d, GOD God. उसके बाद हम डॉट करेंगे, PRAY pray, TO2 GOD God, pray to God. Students, we will put a full stop after GOD God spelling. Okay, now we'll write number 3 in the next line between 2 blue lines. After pray to God, we will write the next sentence, that is brush your teeth twice a day. So we will write capital B, small r, small u, small s, small h, BRUSH, brush. We will keep 1 finger space, then we will write Y from blue line till red line, then we will write small o, small u, small r, YOUR, your. Then we will keep 1 finger space, then we will write small t, small e, small e, small t, small h, TEETH, teeth. Again we will give 1 finger space, then we will write small t, small w, small I, small c, small e, TWICE twice. अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आफ्टर रेड लाइन. So we'll write small a between 2 blue lines, we'll give 1 finger space, then we will write small d, small a, small y, DAY, day. So the sentence is BRUSH, brush, YOUR, your, TEETH, teeth, TWICE twice, or DAY, day. We will put a full stop after the day. So the sentence is brush your teeth twice a day. Students, learn the points of good habits by heart. Okay? Thank you and have a nice day.